Odisha's Industries Minister Sampath Chandra Swai has confirmed that plans are afoot for South Korean steel giant POSCO, in collaboration with JSW Steel, to set up a 6 million tons per annum integrated steel plant in Keonjhar. He said the state government has fast-tracked land acquisition and resource allocation, signalling full commitment to the project. The new facility is part of a 50:50 joint venture between JSW Steel and POSCO, combining JSW's domestic execution strength with POSCO's global steel-making expertise. The partnership will conduct a detailed feasibility study to finalize the site and investment plan, aligning with India's Atmanirbhar Bharat vision and positioning Odisha as a global steel hub. This marks a revival of POSCO's Odisha story. Nearly a decade after his ambitious $12 billion project in Jagatsinghpur was scrapped over land hurdles and local opposition. If realized, the Keonjhar plant will significantly boost JSW's production capacity while giving POSCO a renewed foothold in India's steel sector. पूर्वरु मु आपण माननकु मध्य कहितली JSW आम सहित उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे केउंझर ठारे 6 मिलियन मेट्रिक टन रो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रतिष्ठा करिवो बोली आम सहित एमओ करिथिला एवं परवर्ती मुहूर्त रे ताकू एचएलसी रे मध्य माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अप्रूवल करा जाइथिला एवं सेही काम को एपर्यंत आमर विभाग तरफरु सरकार तरफरु तार द्रुत गति रे से कार्य आगौची लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया चालुची एवं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मध्य JSW केउंझर रे शिल्प प्रतिष्ठा पाई से कार्य आगु को बढ़ुची आउ जो पोस्को JSW एमओ तांको भीतर जो जॉइंट वेंचर हेची जे ओडिशा को से माने प्राधान्य दउचंती ओडिशा रे प्रतिष्ठा करिया पई निश्चित भाबरे आमे सबु बेल पई प्रस्तुत अछु।